Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study about the gross anatomy of kidneys, both right and left kidneys. So you need to know about the location of the kidneys and from where to where they extend and how many borders and surfaces are there, and then their blood supply and the renal fascia of the kidney is very important regarding the examination point of view. Every year they ask something from the renal fascia. There are three coverings of the kidney which you should know in very much detail. So we will start kidneys. They are located mainly in the lumbar region, and along with that they are located in the right and left hypochondriums, and also partly present in the epigastrium. So right kidney will occupy the right lumbar region and right hypochondrium and epigastric part. Then the left kidney will occupy the left lumbar region, left hypochondrium and epigastric part. So kidneys have two surfaces. This is the anterior surface, while this is the posterior surface of the kidney. Anterior surface of the kidney is smooth, while the posterior surface of the kidney is much irregular. The anterior surface of the kidney is irregular, while the posterior surface of the kidney is smooth. You cannot appreciate it on the model, but on the specimen you can see that anterior surface is irregular but the posterior surface is smooth. While kidneys have two poles, this one is known as the upper pole, while this is the lower pole of the kidney. You can see here there is a concavity in the middle part of the kidney. There are basically two borders. One is the medial border and one is the lateral border. So the medial border in the middle part, it is giving hilum of the kidney, and from the hilum of the kidney three things are originating. One is renal artery, second is renal vein, and then in the hilum of the kidney there is renal pelvis which is originating from the kidney. So every time they ask in MCQ or Viva that what are the contents of hilum of kidney. So you tell that hilum of the kidney contains renal artery, renal vein and renal pelvis, while there are two borders, medial and lateral, two poles, upper and lower poles, and two surfaces. One is anterior surface and second is posterior surface. The lateral border is convex, while medial border of the kidney is concave. Now there is the location. I already told you the location. Now the extension of the kidneys. Vertically, so this is the vertical position of the kidney. Vertically it extends from the T12 to L3 vertebra. Vertically extend from T12 to L3 vertebra. Then comes the relations of the kidneys. There are some common relations which both left and right kidneys share, while there are some different relations of the kidneys according to their location. Right kidney have different relations because there are different viscera present on the right side, and left kidney will have some different relation because on the left side different visceras are present. So first of all we will study the common relations. In common relations, if you see the upper pole of the kidney, this is upper pole of the kidney. Upper pole of the kidney contains a suprarenal gland on both sides. On the right side, upper pole will have right suprarenal gland, while on the left side there will be left suprarenal gland. Those suprarenal glands reaches up to the upper part of the hilum, and they have a very important function. They produce hormones which you are going to study in the endocrinology part of the physiology. So after that, medial border. Medial border have always a common relation for both right and left kidneys. As I told you, renal pelvis comes from the hilum. So in the on the medial border, suprarenal glands in the upper part of the kidney, suprarenal gland will be present, and also the ureter. So ureter is originating on both sides of the kidney, so it is a common relation for the both kidneys. While on the posterior side, as kidneys are retroperitoneal organs and kidneys are present posteriorly, after the kidneys there is posterior abdominal wall, and that's it. तो एंटीरियर जितनी भी एंटीरियरली सब कुछ पड़ा हुआ है, उसके बाद किडनीज आती हैं, एंड आफ्टर द किडनीज देयर इज पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर. सो posterior relations of the kidney, which are common relations, are going to be diaphragm and medial and lateral arcuate ligaments, and muscles of the posterior abdominal wall, again which we are going to study later. And the muscles of posterior abdominal wall are psoas major and quadratus lumborum, transversus abdominis. So these three muscles will be in relation on the posterior side of the kidney, and also there are subcostal vessels which are present posteriorly, and they will have the relations with the kidneys on the posterior side. Now comes the different relations of the kidney according to their location. So first of all we have the relations for the right kidney.
So what are the things which are different in the right kidney? One is going to be right suprarenal gland. Again, this is a common, the suprarenal gland is present on both sides. But on the right side there is right suprarenal gland, on the left side it is left suprarenal gland. So different relations of right kidney are right suprarenal gland, and on right side there is liver, so liver will be present. On the right side there is second part of the duodenum. Hepatic flexure of the colon is present and small intestine is present. So on the right side you have to remember all the viscera which are present on the right side, they will have the relations with the right kidney. Then comes the relations of left kidney. You know that spleen, stomach, they lie, and part of the pancreas, they lie on the left side. So left suprarenal gland will be in relation with the left kidney. Then spleen, stomach, pancreas, again the part of pancreas which is the tail of pancreas which is going on the left side, and splenic vessels supplying the spleen, and jejunum is also present on the left side. So these will share the relations with left kidney. After that comes the capsules or coverings of the kidney, which are very important and frequently asked in UHS. Now it's a turn for the renal fascia. Please note it down. It's a VIP question and you need to be very much attentive while listening to the lecture of the renal fascia. If you do not get the concept clearly, you cannot cram it up. So you need to understand the concept fully. For that I draw the diagram. You can see this blue lining, this is the kidney, right? So I draw the kidney and this is the hilum, and then from the hilum ureter is coming out. Now the black layering is the first layer of the fascia. Basically there are three layers for the renal fascia. First layer is going to be fibrous capsule, then there is perirenal or perinephric fascia, which is further divided into fascia of Girotta and fascia of Zuckerkandl. Then the third layer is paranephric fat, peri and paranephric fascia or fat. So first layer is going to be fibrous capsule. Along this blue margin you can see there is running a black margin. तो ये जो black margin है, this is the fibrous capsule which is enclosing the kidney at first place. After this black fibrous capsule, there are two layers which are collectively forming, this red one and this blue one. They collectively form the perirenal fascia. After the perirenal fascia, you can see I formed this fatty layer outside. This is the fatty layer. This fatty layer is the outermost layer, and that is known as pararenal fascia or paranephric fat. First we are going to study the detail of fibrous capsule. As the name shows, it's a fibrous capsule, so it is adherent to the kidney, but it again ये इतना ज़्यादा thin layer होती है कि if you remember जो डेट्स होती हैं, खजूरें होती हैं, उनकी जो गुठली होती है उस पर ऊपर एक पतली सी लेयर होती है. तो फाइब्रस कैप्सूल के अटैचमेंट को समझाने के लिए उसकी एग्जांपल दी जाती है कि वो जो गुठली होती है डेट की, वो जितनी इजीली शॉपर की तरह से रिमूव हो जाती है और बहुत पतली लेयर होती है, तो फाइब्रस कैप्सूल बिल्कुल किडनीज के साथ वैसे ही होता है और उसको ईजिली आप उतार सकते हैं. आफ्टर दैट फाइब्रस कैप्सूल देयर इज पेरीरेनल फेशिया. To understand the concept of perirenal fascia, it's very important. Perirenal fascia is dividing into Zuckerkandl and Girotta layers. Anterior layer, there are anterior and posterior layers, and the anterior layer is known as fascia of Girotta and posterior layer is known as fascia of Zuckerkandl. Now, so this will be fascia of Girotta. This will be fascia of Girotta and this will be fascia of the Zuckerkandl. इसको समझने के लिए मैं आपको इधर समझाऊंगी कि एक इसके बारे में ओल्ड थ्योरी और इसके बारे में जो है न्यू थ्योरी है. अगर ओल्ड थ्योरी हम क्यों पढ़ें, जब वो रिजेक्ट हो गई हमें न्यू थ्योरी करनी है. बट BD has given two. If you want to see the old theory you can see, but I am going to only tell the new theory for the renal fascia. So this perirenal fascia, two layers, right, fascia of Girotta and fascia of Zuckerkandl. These both are fused already. Those both layers are fused and they present as a multi-laminated structure. और ये posteriorly जो है हमारे पास multi-laminated structure की फॉर्म में anterior और posterior layers पड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ fuse करके. ये जो इधर फ्यूज़ करके पड़ी हुई होती है मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर, इसके पीछे जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं. तो ये जो फेशिया होता है ये ब्लेंड कर जाता है विद दोज मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, मीन्स psoas major and quadratus lumborum and etc. आफ्टर दैट ये जो
फेशिया है ना, जो ब्लेंड मल्टी लैमिनेट स्ट्रक्चर है, ये इधर पोस्टीरियो मीडियली जो है सबसे ज़्यादा थिकंड होता है, यानी कि हाइलम के पार्ट्स। यहाँ से ये फेशिया आगे को आता है और यहाँ पे एंटीरियो मीडियली आ जाता है। तो एंटीरियो मीडियली ये एक मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर दे देता है। यू शुड नो कि जो सबसे ज़्यादा थिकंड होगा ना फेशिया ऑफ जिरोटा ज़ोकर कैंडल, वो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो लेटरल बॉर्डर है और वो ये मीडियल बॉर्डर है। लेकिन पोस्टीरियो मीडियली ये फेशिया होता है और ये आगे को आता है और एंटीरियो मीडियली जो है थिकंड हो जाता है। और जो लेटरल बॉर्डर है वहाँ पे ये लेटरल कॉर्नल फेशिया बन रहा होता है लेटरल बॉर्डर का, उसके साथ ये रन कर रहा होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि जो अपर पोल है किडनी के, वहाँ पे भी ये पेरीरीनल फेशिया प्रेजेंट है। अब जो अपर पोल है, ये राइट और लेफ्ट जो है ना, इधर डिफरेंट विस्टा पड़े हुए थे, तो अपर पोल डिफरेंट विस्टास के साथ कांटेक्ट में। और राइट साइड देयर इज लीवर, तो जो अपर पोल है किडनी का, वहाँ पे जो फेशिया है ना वो राइट साइड यानी कि लीवर के इंफीरियर कॉर्नरी या पोस्टीरियर लेयर, कॉर्नरी लिगामेंट की 2 लेयर्स होती हैं, एंटीरियर लेयर होती है और पोस्टीरियर लेयर होती है। तो जो पोस्टीरियर लेयर है ना कॉर्नरी लिगामेंट की, अगर आपको मैंने यहाँ पे बताया था कॉर्नरी लिगामेंट की, ये एंटीरियर लेयर है, ये पोस्टीरियर लेयर है, तो इसके पीछे किडनी होगी, तो इसकी पोस्टीरियर लेयर ऑफ कॉर्नरी लिगामेंट जो है वो ब्लेंड कर जाएगी विद द फेशिया ऑफ द अपर पोल। जबकि लेफ्ट साइड पे जो है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट होता है, जो स्टमक के फंडस और डायफ्राम के बीच में बन रहा होता है। तो ये जो फेशिया है ना उस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट अपर पोल जो है ना उसके साथ ब्लेंड कर जाता है। तो देन द थर्ड लेयर कम्स विच इज़ पैरानेफ्रिक फैट, जो कि ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो ये वाली है, ये वाली जो है, ये वाली, ये पैरानेफ्रिक फैट होती है। तो पैरानेफ्रिक फैट को मैंने इस तरह फैट की फॉर्म में ही आपको दिखाया। तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट एंड लाइंग आउटसाइड द रीनल फेशिया, ये रीनल फेशिया उसके ये बाहर होती है। और ये सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंट वो पोस्टीरियरली होती है, और सबसे ज़्यादा आके इधर लोअर पोल पे, यहाँ पे मैंने इसको डबल किया है, तो लोअर पोल जो है किडनी के, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है। जबकि आप देख सकते हैं कि जहाँ हाइलम वाली जगह है वहाँ पे ये तीनों लेयर्स तो प्रेजेंट है, लेकिन मैंने हाइलम वाली जगह पे इसको छोड़ दिया, तो जो फेशिया है यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता नियर द हाइलम ऑफ द किडनीज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीनल फेशिया। देन कम्स द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनीज। इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो थोड़ी ट्रिकी है, तो उसको जो है आपने अच्छे से याद रखना है। अब मेन तो आपको इस मॉडल पे दिख रही है कि ये रीनल आर्टरी है। जो रीनल आर्टरी है वो हाइलम ऑफ किडनी में जो है एंटर करती है और वहाँ से जो है ये ब्लड सप्लाई दे रही होगी, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। रीनल आर्टरी एओर्टा से अराइज करती है और जब ये हाइलम में एंटर होने लगती है, यहाँ पे ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक दे देती है एंटीरियर डिवीजन और एक दे देती है हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन। फर्दर ब्रांचिंग होती है इस एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स की, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। जब ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन हुई रीनल आर्टरी की, वहाँ से जो है ये फर्दर एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स जो है फर्दर जो डिवाइड होती हैं और बना देती हैं हमारे पास सेगमेंटल आर्टरीज। तो जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं ये फर्दर ब्रांचिंग करके जो है वास्कुलर सेगमेंट्स को सप्लाई करना शुरू कर देती हैं। वास्कुलर सेगमेंट्स के 5 पार्ट्स होते हैं जिनको ये सप्लाई करती है। एक एपिकल जाएगी, इधर सप्लाई करेगी, एक मिडल पार्ट को सप्लाई करेगी, एक अपर पार्ट को सप्लाई करेगी, मिडल पार्ट को, फिर हमारे पास आ जाएगा लोअर पार्ट और फिर आ जाएगा पोस्टीरियरली, वहाँ पे ये सप्लाई करेगी। तो सेगमेंटल एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रीनल आर्टरीज फर्दर डिवाइड टू बिकम सेगमेंटल आर्टरीज। देन सेगमेंटल आर्टरीज जो है इट सप्लाइज द वास्कुलर सेगमेंट्स विच आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द किडनी, और उनको सप्लाई करेगी। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं ये फर्दर डिवाइड कर जाती हैं इनटू द लोबार आर्टरीज। तो आपने इसी डायग्राम को ही याद रख लेना है। तो ये सेगमेंटल आर्टरीज आगे लोबार आर्टरीज बन गई। ये जो हमारे पास लोबार आर्टरीज बनी वो फर्दर डिवाइड हो रही हैं इनटू द इंटरलोबार आर्टरीज। तो सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर डिवाइड्स इनटू लोबार एंड लोबार फर्दर डिवाइड्स इनटू द इंटरलोबार। इंटरलोबार आगे क्या बना देती हैं, ये आर्कोइट, मैंने आर्कोइट फॉर्म में ही बनाई। तो ये जो आर्कोइट लोबार इंटरलोबार फर्दर डिवाइड्स इनटू arcuate arteries. Now these arcuate arteries are further going to divide and will give the interlobular arteries. ये जो interlobular arteries हैं, these are the end arteries and they are not anastomosing with any of the artery, and these are the end arteries for the blood supply of kidneys. Again I am repeating, renal artery originating from the aorta, entering the hilum, dividing into anterior and posterior divisions, further dividing into segmental arteries. Segmental arteries
are giving blood supply to the vascular segments and then dividing into interlobar arteries. Into lobar arteries. These lobar arteries will further divide into interlobar. These are interlobar and they will form the arcuate artery, and arcuate artery further will give interlobular arteries. So this is the blood supply for the kidneys. For the venous drainage बिल्कुल उल्टा है. सबसे पहले पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस में venous drainage आएगा. From there it will drain into the interlobular veins and then into arcuate veins and interlobar vein and then the renal vein. देखिए बिल्कुल उल्टा है. यहाँ पे ये पहले इंटरलोबुलर वेन, फिर लोबार में, और फिर इंटरलोबुलर में, इंटरलोबुलर से फिर आर्कोइट में, और फिर इंटरलोबार में, एंड देन अल्टीमेटली ड्रेनिंग इनटू रीनल वेन. एंड रीनल वेन इज taking the drainage from the kidneys and draining into the inferior vena cava. For the lymphatic drainage of the kidney, lymph of the kidneys drains into the lateral aortic lymph nodes. Again, frequently asked questions in the MCQs for the lymphatic drainage of kidneys. Thank you so much. That's it for the kidneys. Then now from tomorrow we are going to start the anatomy of ureter.